The taste of fresh plums on a hot summer morning is unmatched. And this is Shobha. Shobha and her husband grow these plums for us in their orchard in the valleys of Himachal Pradesh. But there is something that irks this couple: our ignorance and apathy towards climate change. दिल्ली में बैठे जो लोग हैं, जो आपके हिमाचली सेब खाते हैं, दिल्ली, बम्बई, बड़े शहरों में, वो ये कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा, या क्लाइमेट चेंज कहीं हो रहा होगा, हमें क्या पता, यहाँ तो नहीं हो रहा। हाँ, तो उनको क्या है, उनको क्या पता है? तो आप उनको क्या बोलेंगे? नहीं, हम उनको एक चीज़ बोलेंगे कि भी आप जो फ्रूट खा रहे हो, इसमें फ़र्क पड़ रहा है, क्लाइमेट का इसमें भी फ़र्क पड़ रहा है। तो क्लाइमेट चेंज सच है या झूठ है? बिल्कुल सच है। ये तो हमने सबने देख लिया ना, ये हमने महसूस कर लिया इस चीज़ को। क्लाइमेट जो है हर जगह ही चेंज हो रहा है। But first, a quick backstory of how we met these people. Remember our journey through the orchards of Himachal Pradesh? Well, this is what it looked like. And my journey continues. नमस्ते, मेरा नाम साधिका है। आपका अपना फार्म है? हाँ जी, अपना फार्म है। वहाँ पे क्या क्या उगाते हैं? वहाँ पे सेब भी है, प्लम भी है, शक्करपारा भी है। हम तो शुरू से ही करते हैं, बचपन से ही करते हैं। Being a farmer for years, Shobha understands the needs of her orchard. प्लम वगैरह का या सेब का ये साइज बड़ा होगा या छोटा होगा, लाल होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? धूप पे और बारिश पे। But these essentials that you and I take for granted are not as abundant anymore. Things are changing and changing rapidly for the worse. मौसम में तो ये है कि पहले ये हम जब बचपन में थे, मैं 53 का मेरा बर्थ है, तो उस वक्त हम जब महसूस करते थे, देखते थे जब जानने वाली हुई, तो मौसम जो है ना, ये समझिए कि बर्फ़ जब होती, बर्फ़ का सीज़न होता दिसंबर के अंदर, तो बर्फ़ पड़ती ही पड़ती थी। एक फिक्स डेट थी कि 25 दिसंबर के बाद स्नोफॉल होना ही होना है। लेकिन अब यह है कि अभी जनवरी भी निकल जाती है, बर्फ़ नहीं होती। जब होगी तो 6-4 इंच होगी। गर्मी भी एक्सेस पड़ रही है आजकल। देखिए आप, यहाँ पे कभी 30 क्रॉस करता नहीं था टेम्परेचर, इस बार 30 क्रॉस किया। बहुत ज़्यादा गर्मी हुई। बरसातों का भी अब नॉर्मल ही है कि कभी कम होगी, कभी ज़्यादा होगी। इसका मतलब एनवायरनमेंट में फ़र्क पड़ ही रहा है। And this isn't really good news for our apples. एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। लेकिन अब वो चीज़ नहीं रही। अब तो सेब में वो चीज़ रही नहीं। डॉक्टरों को भी अपनी वो बदलनी पड़ेगी अब, डेफिनेशन। हाँ, बदलनी पड़ेगी। सेब में वो चीज़ रही नहीं। While these changes might not mean much to us, for farm families like Shobha's, this means lesser and lesser earnings with each passing year. They're becoming progressively poorer. तो इतने ही इसमें कम से कम 800-900 पेटियाँ हो जाती थी। 900 पेटियाँ। हाँ। और अब इतने ही बाग में कितने से की पेटियाँ होती हैं? अब कम हो गए हैं, पहले से प्रोडक्शन घट गई है। There is a dearth of what is needed and an excess of what is not. What Himachali farmers really dread are the hailstorms. And saving their orchards from it costs a lot. I mean a lot. हम ये देख रहे हैं पिछले 15 सालों में यहाँ पे इतने नट्स नहीं पड़ते थे, लेकिन रिक्वायरमेंट ऐसी हुई कि कभी ओले यहाँ पड़े, कभी उस इलाके में पड़े, कभी तीसरे में पड़े, तो सब ने महसूस किया कि ये तो बहुत ज़रूरी आइटम होगी, रखनी ही पड़ेंगी। और इन लैक्स, मतलब ये सस्ता वो काम नहीं है। एक जाली जो है ना, ये 25-30 हज़ार की आती है। As input costs shot up, profits have only plummeted. तो उससे और महंगा नहीं हो गया खेती करना? महंगा तो है, तो क्या है, सस्ता। महंगा तो बहुत है, पैसा तो लगता है। आपका लागत बढ़ी है, आपकी आमदनी भी उतनी बढ़ी है? कहाँ बढ़ती है, पूरा होता है। तो आने वाले 5 साल में, 10 साल में आपकी तरह जो छोटे किसान हैं, जिनकी थोड़े से बाग हैं, 6-7 बीघा, इनका क्या होगा? आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में कैसे चलेगा? हाँ, मुझे लगता है कि भी आने वाले टाइम में कि भी
हमारा जो फ्यूचर है ना ये बड़ा डार्क है। But what is this dark future? To seek some answers, we are on our way to Himachal's Solan district. So today we are having our morning cup of tea with Mr. Deepak Singh, who's a very interesting person, because he realized that traditional knowledge in the face of climate change was not really working for the farmers who were working in these orchards. And basically he's telling farmers to sort of innovate and adapt. Deepak decided to show us the Krishi Vigyan Kendra or KVK in Solan. This is the place for agri-innovation in Himachal. The place where climate change is being fought in laboratories, or so we thought. Okay, now we have come to the KVK Kanda Ghat. If you see this tree, I don't see any fruit on this tree. I mean, just imagine, this is KVK, all the scientists are out here. If the scientists cannot produce fruit on this tree, I don't blame the scientists, it is all about the climate change. Several farmers come here to understand what they are doing wrong and what techniques can they adopt. Ramesh, a farmer from Bilaspur, is distraught because rising temperatures have pushed him into debt. He had to sell his land to come out of it. और ये सब टेम्परेचर की जैसे दिक्कत आ रही है ना? क्लाइमेट चेंज हो गया है जिस वक्त। अब हमारे बिलासपुर में लू वगैरह चलती थी, अब हमारा टेम्परेचर चला जाता है 50 तक। आपके यहाँ पे लू चलनी कब से शुरू हुई? टेम्परेचर बढ़ा कब? मैंने बताया 97 के बाद जो हमारी लीची की फसल आई ना जी, वो 97 में आई लास्ट। उसमें 2 क्विंटल पर पेड़ आया जी। लीची का पेड़ पैदा तैयार करना ना जी, ये तो बच्चे से भी ज़्यादा मुश्किल है। मक्की बेची मैंने 1,31,000 की, तो जब खर्चा जोड़ा ना जी उसका, तो 1,11,000 लिखा है। मैं रोज लिखता हूँ साहब, तो 20,000 बचे। 20,000 एक महीने का खर्चा भी हुआ मेरा किचन का। There is something here that plagues the fields across Himachal. And who better than the stone fruit man himself to explain it to us? So we are in an orchard. यहाँ पर peaches हैं, plums हैं, apples हैं, and we are eating fresh peaches. And we are sitting with a man who knows everything about stone fruits. So sir, take us back some 50 years ago and tell us the story. If you look at 50 years back, apples would do very well at about 6,000 feet, right? The 50-year journey of the fruit economy of Himachal. Now 3,000 feet, the stone fruits are not performing the way they should be performing because the temperatures have moved up. So there is a climate change of 1 degree centigrade has changed the fruit economy from 3,500 to 4,500. This 1 degree rise in temperature may not matter to us, but for the farmers this had brought immense pain, even poverty. The farmers feel it more because it impacts their livelihood. A person living in the city gets a job, so what has he got to do with the climate? It doesn't make a difference to him. Deepak broke down the math of profits and losses that Shobha had told us about. The climate is getting so distorted that the input costs in terms of drip irrigation, water management and the production per tree is also reduced. So the climate has impact not only the productivity per tree but also impacted the input costs. So and what is happening is some farmers are now calculating if they are earning 100 rupees, they are actually spending 120 rupees. So I mean, for how long can we go forward on this thing? At the heart of this problem lies one more thing, which is completely man-made. Poor policy. Have the policymakers recognized climate change and have they started acting on it? As far as the policy makers are concerned, they are not even bothered about, there is no policy. Policy cannot be only on the fruit part of the policy. The policy has to be on the overall holistic approach has to be taken place. The government is still very lopsided in really planning. Are they still in denial? They are absolutely in denial because they are sitting in their offices on chairs. They don't understand the ground truth. And when you try to explain the ground truth, they don't want to recognize the ground truth because they think that they are being challenged by farmers, and we are bureaucrats, we are IAS officers, we are scientists. Who are they to tell us what should the policy be? Deepak resonated with the idea of this dark future that Shobha's family dread.
In this situation, what is the worst case scenario that we are looking at for farmers in the next 10 years? See, the thing is that if the government doesn't have policy, then let me tell you, farmers have no future. We now understood the gravity of this problem, its consequences, and how the future will look. But we still believed that there must be something or someone trying to solve this. And if there were any solutions or solution makers, we wanted to meet them. So we decided to not end our journey yet.